Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I hope you all can hear me and see me. Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session. Sir, can you hear me, Nikun sir? Yes, you're audible. Am I audible? Yes, sir, you're clearly audible. Perfect. So I'll just share my screen. Give me a minute and then we can go to. Sure, sir. Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session where we focus more around stock options and see if we have any strategy trade in the indexes because हमारी जो Fin Nifty expiry है वो बंद हो चुकी है. So we'll see if we can have any stock option trade. Yesterday stock option was profitable and the commodity. So feel free to drop your queries in the chat. We'll be happy to take them up if we have time. We'll start with the market outlook and then market outlook, index outlook, and then we'll move towards the trades. Today for the afternoon session, we have Nikunj Patwa sir with us. Good afternoon, Nikunj sir. Welcome to the afternoon session. Good afternoon. I think my screen is visible right now. Yes, sir. Your screen is visible. You are visible. We are good to go. Perfect. So good afternoon, Anuj. Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session. जो as rightly said previously, Fin Nifty की expiry हुआ करती थी, but now that all the expiries have been barring Nifty and Sensex, all the others have been shifted to monthly contracts. So आज weekly expiry नहीं है, but nevertheless we are here. We are here to help you navigate this trades and stock queries and stock or any trade if there is in there or any strategy जो हम give in the later part of the session. So good afternoon. I think Nifty आज थोड़ा सा ऊपर से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का करेक्टिव मूव आया है, ऑलमोस्ट 1.5% नीचे है. तो लास्ट एज अ होलिस्टिक व्यू अगर देखें तो नीचे में 24,000 और 23,800 एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है फॉर मीडियम टर्म पर से. सो जब तक 24,000 और 23,800 और ऊपर में 24,800 और 850, तो एक ब्रॉडर 500-600 पॉइंट का एक रेंज है वेर इन नीचे से सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ जाती है. फ्राइडे को हमने देखा कि काफी शार्प करेक्टिव आया था, लेकिन सेकेंड हाफ में एक शार्प रिकवरी आई थी. तो नीचे में सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटैक्ट है. एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड स्टैंड से थोड़ा सा सेल ऑन बाउंस कर सकते हैं जब तक 24,800 के ऊपर क्लोज नहीं आता निफ्टी में. बट वापिस नीचे में 24,200 और 24,000 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है. और नीचे में थोड़ा मीडियम टर्म के लिए 23,800. तो ये सपोर्ट है निफ्टी में नीचे में. ऊपर में 24,800. अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन वी कैन से दैट इट कैन गो ऑन अनदर 400-500 पॉइंट्स का रैली आ सकता है निफ्टी में. बट एज ऑफ नाउ इट इज गॉट स्टक इन दिस 500-600 पॉइंट्स. अगर नीचे में सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ जाती है ऊपर में, लेकिन वापस एक सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट. बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी relatively कल it was doing good. आज it has corrected almost 800 points and 1.5% नीचे है. बट जैसे फ्राइडे की कैंडल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो नीचे में जल्दी से 52,000 एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है. एंड उसके बाद जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 51,750 के आसपास है. और ऊपर में 53,850 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर उसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो इंडेक्स कैन स्केल टू फ्रेश लाइफ टाइम हाइस जो प्रीवियसली 54,457 था, उसके ऊपर भी जा सकता है. अगर डेटा वाइज की बात करें तो मैक्स पेन एज ऑफ नाउ इंडेक्स का है, इट इज नियर 53,000 एंड द option OI concentration is basically between on the call side it is 53,000 and 53,500. और आज सुबह से we have seen sharp addition in 53,000 call. तो 15,000 कॉल के ओपन इंटरेस्ट में आज अच्छी खासी बढ़त दिखी गई है, which is why index has been under pressure from the morning ever since it broke 53,000 and highest OI concentration भी 53,000 कॉल पे है और 53,500 and put side में 52,500 and 52,000.
तो OI data wise the broader range is basically 52,000 and 53,500. तो ये 1500 पॉइंट की रेंज फिलहाल सजेस्ट कर रहा है OI data as of now. एंड इवन इन बैंक निफ्टी के कंपोजिट की बात करें तो HDFC बैंक विच इज द हेवीवेट, इट हैज बीन डूइंग रिलेटिवली वेल. 1800 के बाद क्लोज आने के बाद एक अच्छा स्टेलर मूव देखा है वेर इन इट हैज गेन्ड ऑलमोस्ट टू फ्रेश लाइफ टाइम हाई ऑफ 1880 के आसपास. तो नीचे में एक सपोर्ट है 1800 का एंड ऊपर में 1880 का रेजिस्टेंस है. बट रिलेटिवली HDFC बैंक एंड द अदर heavyweight which is ICICI Bank. So ये दो stocks from the banking per se banking universe has been doing good, and which is why it has managed to scale past 50 to 500 जो previous resistance था. उसके बाद एक almost 1200 point की rally आई थी, ऊपर से थोड़ा सा corrective move. तो the rally was mainly led by ICICI Bank and HDFC Bank. तो चार्ट स्ट्रक्चर दोनों के relatively better placed है. वहीं उसके सामने अगर हम देखें तो जो अंडर परफॉर्मेंस है दैट इज बीन मेनली डाउन टू एक्सिस बैंक व्हिच इज नियर इट्स लोअर बैंड ऑफ द लोज, जबकि एक्सिस एंड जबकि ICICI एंड HDFC बैंक आर ट्रेडिंग नियर लाइफ टाइम हाइस. Axis Bank is trading way off the lifetime high, so and it's consolidating in a narrow band. तो जहाँ पे दो स्टॉक लीड कर रहे हैं, there are laggards like Axis Bank and IndusInd Bank, which has been underperforming. Although IndusInd Bank का इतना weightage नहीं है, but it is relatively underperforming the banking universe as a whole, and it is almost trading near its 52-week lows. So Axis, IndusInd Bank and Kotak एक कई हद तक I think being a थोड़ा laggard है, लेकिन रिलेटिवली इट इज बेटर प्लेस इन एक्सिस एंड इंडसइंड. बट कोटक ट्राई कर रहा है 1815 के ऊपर क्रॉस करने का. अगर 1815 निकल जाता है तो ऊपर में वापस एक 70-80 पॉइंट्स की तेजी बन सकती है इन कोटक बैंक. तो इंडेक्स में दो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 3-4 है जो लगाड़ है, विच इज वाई ऊपर की तरह मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा है. बट जब नीचे आता है तो सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटैक्ट हो जाती है इन बैंक निफ्टी. So that is why I think to play this range bound move wherein we are expecting this, and importantly, more important, I just quickly share that कल Fed meet का outcome है on rate cut जो करेंगे. तो that would be a major event, which is why India VIX की चार्ट कर रही तो हम लास्ट 2 दिन में द इंडिया विक्स स्पाइक्ड ऑलमोस्ट 11-12%. तो नीचे 12-12.5 के लेवल से ऑलमोस्ट 1470 के लेवल आ गए. तो लास्ट 2 दिन में 12% इंडिया विक्स बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इवेंट. तो विच इज वाई द प्रीमियम्स हैव स्पर्ड. तो एक हमारा ओवरऑल व्यू ऑन बैंक निफ्टी इज साइडवेज टू पॉजिटिव जब तक नीचे में 52,000 नहीं ब्रेक करता है. So I think to play this sideways kind of a move wherein ऊपर में सब रेजिस्टेंस है लेकिन नीचे में सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ जाती है. तो I think to play this we can do an iron butterfly. So I'll just quickly run through the strategy, how to go about and how we'll compose this strategy. तो स्पॉट चल रहा है 52,750, ठीक है. तो what we'll do is 52,800 के कॉल पुट, जो अभी तो मंथली का ऑप्शंस है, तो 52,800 का कॉल एंड 52,800 का पुट, ये दोनों सेल कर देंगे एंड विल बाय 500 पॉइंट्स ऊपर OTM कॉल दैट इज 53,300 which is around 350 and 52,300 call. So this is a strategy that we'll go with. 52,800 का call put हम दोनों sell करेंगे and will buy 53,300 का call along with will buy 52,300 का call put. So this strategy is a credit strategy. तो ये वाले strategy में will get roughly inflow of 400 or to 420 points and will the maximum loss would be the 80 points, that is 410 minus the 500 का जो हमने spread किया है. तो max loss in this strategy would be
the 80-90 points जो जितना इन्फ्लो लिया है that minus the strategy का range. So 500 points का spread किया है. So basically till the time the index जो हमारा view है range bound to positive till it is between 53 200 and 52 400 ये 800 पॉइंट के रेंज में रहेगा तब तक we will not make will not be out of picture, will not make loss in this strategy. The loss will incur once we are once the index goes beyond our buying option जो हमने किया था. तो 52 300 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है ऑन द एक्सपायरी पर से या 53 300 के ऊपर क्लोज आ जाती है तो will make the maximum loss that the strategy has. So it's a credit strategy where we'll get an inflow of it because we are selling almost at the money call put and we are buying the wings which is the butterfly wings 500 point ऊपर नीचे के OTM call and put. So roughly the strategy ka inflow is around 420 points and the risk is 80 points. I hope I am clear on the strategy, Anuj. Yes, sir, you are clear. Yeah, I'm just writing it down as well. yeah. So meanwhile, if you can share the BTST. I'll just go through once. I think BTSC say I think one CDI. I think BTSC I'll quickly share. We have I think Devyani. I'll share one BTSC and one CDI, which is looking good. So Devyani is one stock which is our BTST first BTST for the afternoon session, wherein we can buy at CMP, keeping a stop of 165 and look for 176 and 178 on the higher side. So Devyani International एक bottom out होके higher lows करके 2-3 दिन का range breakout है and it is almost on the verge of breaking the 200-day 100-day exponential moving average on the higher side. So 170 का price है 165 का stop से you can buy Devyani International with a target of 176 to 178. And also one CDI idea I'd like to share that is United Spirits. So I think the stock has given a breakout from its inverted head and shoulders pattern and it is holding relatively well 3% ऊपर है जबकि the frontline index is down by 1.5%. So एक relative outperformance है in United Spirits and which is why जहाँ पे strength है you should be there. So we have initiated a CDI idea on United Spirits when you can buy at CMP, keeping a support of 1520 and look for 1650 on the higher side. So it's a CDI idea, so एक week per se के हिसाब से है, तो do position accordingly. But एक relative outperformance है और अपने inverted head and shoulder pattern से एक breakout दिया है and it is sustaining well above the breakout zone, which is a positive sign. So 1520 के support से you can look for 1650 on the higher side in United Spirits. So guys, we have 3 trades. Yes, One is Devyani as BTST, United Spirit for CDI, and Iron Butterfly SPED for our index. Band Nifty index. Bank So our Nifty. view is positive to sideways तो एक range में अच्छे lucrative premiums है and expiry is just what 4-5-6 trading sessions away 22 to expiry. So I think it's a good risk reward strategy wherein 800-900 point तक you are protected and if the close on the monthly expiry day if it close between the range that we have sold I think you will make money in this strategy. So say Devyani and McDowell's that is various spirits we have shared and one strategy on Bank Nifty. So I think in the meantime, if we have any other BTSC, we'll definitely share. We can take a few queries if we have. Yes, sir, we have. Okay. Sir, Ola Electric bought at 91. Should I exit around 100?
or hold till which price? Just a moment. I think ओला अगर ऊपर में रेजिस्टेंस 102 का, अगर 102 निकल जाता है तो 110 का भी टारगेट आप देख सकते हैं ऊपर में. तो आई थिंक यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू आई थिंक व्हाट इज हिज बाइंग प्राइस 87. Yes, sir. Okay, so you can trail your stop loss to 94 and hold. So at least you will. I'm sorry, sir. The buying price is 91. Sorry. Okay, 91. Okay, so you can trail your stop loss to 95. तो यहाँ से और ₹2.5 का रिस्क है. 95 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए. अगर ऊपर में 101 102 निकल जाता है तो 110 के टारगेट भी देख सकते हैं. तो आई थिंक यू विल नॉट लूज आउट ऑन द ट्रेड. एटलीस्ट एक रिस्क ले सकते हैं वेर इन यू आर मेकिंग मनी. सो थोड़ा सा एक प्रॉफिट से रिस्क ले सकते हैं. दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग. ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 95 एंड होल्ड. Sir, your view on Swiggy? Swiggy, although the data for the chart is very low, but it has been doing well. Even Zomato and Swiggy. Zomato is our all-time favorite stock. So we have been pushing Zomato from many months now. Even Swiggy, same sector में, but data का मैं technically I cannot comment too much. But नीचे में 550, 570 का 550, 560 का एक सपोर्ट है. जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, होल्ड ऊपर में 640 के टारगेट्स के लिए. Although the data is less, but the stock is outperforming the sector as a whole. Zomato and Swiggy both are trading at all-time high levels. Although Swiggy का data कम है, so we cannot be too gung-ho with the all-time high. But at least Zomato आज वापस 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो आई थिंक दोनों स्टॉक में तेजी है. तो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड फॉर 640 के टारगेट के लिए. 560 के सपोर्ट से. Sir, Hindustan Zinc? I think Zinc, other metal sectors थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे थे बीच में, बट Zinc गैप डाउन के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद वापस एक फर्दर ब्रेकडाउन दे रहा है. तो नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट है 480 का. 480 से 475. अगर 475 के नीचे क्लोज आ जाता है तो एक आई थिंक इफ यू आर लॉन्ग यू शुड एग्जिट योर पोजीशन. कीपिंग अगर लॉन्ग नया एंट्री लेना है तो वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट. अगर आपका ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो कीप अ सपोर्ट और स्टॉप ऑफ 475 एंड होल्ड. अगर ऊपर में 520 के आसपास आता है तो यू शुड लुक टू एग्जिट योर पोजीशन. Sir, SBI? So SBI, just like the other two outperforming banks, that is Axis and ICICI and HDFC, SBI too has been doing relatively well compared to the other banks. But तो नीचे में एक सपोर्ट है 848 35 का एंड ऊपर में 880 का रेजिस्टेंस है. अगर 880 निकल जाता है तो द स्टॉक कैन इवन गो पास 900 लेवल्स. तो नीचे में 830 के स्टॉप से होल्ड कीजिए सपोर्ट से. अगर आपका पोजीशन है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 830 एंड होल्ड. नहीं है तो आई थिंक यू कैन कंसीडर बाइंग बिटवीन 845 से 838 के बीच में. So your view on Dixon? Dixon has been trading at all-time high, clear outperformance by the stock. तो ऊपर में आई थिंक और जगह है. कल गैप अप हुआ था, आज फॉलो अप बाइंग आई है. तो ये गैप के सपोर्ट से होल्ड कर सकते हैं. अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 18,000 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर 20,200 ऑन द हायर साइड. Shriram Finance is almost down by 5% today. Is it a good entry point? I think Shriram Finance wait for 2950 से 2930. This is a good entry point. आज काफी almost 5% lower है. तो I think जो previous gap up हुआ था ना,
which is near to 2930. So I think 2930 to 2950 is a good entry point. So I think gap up के बाद वो gap area should act as a immediate support. So there's a good risk reward entry point. So 2930 से 2950 is a good entry point for Shyam Finance. And की अगर वहाँ आता है तो if you get a buy feed, keep a support of 2865 and hold for a high target towards 3000. Sir, your view on PG Electroplast. The stock is doing very good. Almost last 15-20 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक फ्रॉम 650 it has rallied to almost 1000. आज 1019 का हाई किया है, ऊपर से थोड़ा सा करेक्टिंग हुआ है, लेकिन ओवरऑल द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज अप. सो वीकली स्केल पे भी आई थिंक द स्टॉक इज मेकिंग हायर हाई हायर लोस. तो आई थिंक जब तक 900 नीचे में ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड एंड लुक फॉर हायर टारगेट्स. जो प्रीवियस कैंडल का लो है 930, तो जब तक 900 के आसपास उसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक आई थिंक द स्टॉक कैन हेड हायर. So which stock to buy for best buy for long term after New Year? After New Year. After New Year, okay. So I think Zomato is one stock you should must have. I always say it's a must have in your portfolio. Even for that matter, some of the railway names they have been corrected. तो एक अच्छा risk reward और entry point है. I think RVNL is one stock that can do well for say at least for the next year. एक ऊपर से corrective हुआ, अभी consolidate कर रहा है, तो I think RVNL for 2-3 years it can do well. Even United Spirits जो हमने share किया है, I think even that stock can do well going forward. And even it's a good stock. अगर अभी नहीं तो करेक्टिव में अगर यहाँ से समझो 1-2 महीने बाद 1450 1400 के आसपास मिलता है, तो इवन दिस इज अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक. Even you can have some large cap names like Infosys है, even for that matter ICICI Bank है. So I think ICICI Bank, Infosys, it's a good mix of mid cap and small cap. So I think these are stocks you can consider for long term per se. Sir, holding lemon tree yesterday BTST और hold कर सकते हैं? Just a minute. I think hold कर सकते हैं. The hospitality sector as a whole is doing great, led by Indian Hotel जो all time high पे है. Even lemon tree has been doing good. Chalet Hotel is doing good. Even EIH Associate Hotel, EIH Hotel. Trail your stop loss. I think अगर trading position है तो trail your stop loss to 147. तो 147 के stop से hold कीजिए and look for higher targets towards 158 and 160 going forward. Sir, idea, should I buy more? Idea, I think it's a hope trade. There is no much thing to talk about in idea. 7 रुपए का stock है, worst that you can lose is 7 rupees. But I think नीचे में I think अगर टेलीकॉम में ही जाना है तो I rather say Bharti Airtel is a better stock in telecom space. So the stock has been outperforming and it will continue to outperform because hardly the industry as a whole, the sector as a whole has got consolidated. 3 major players: Jio, Bharti, and Idea Vodafone. There are 3 players left. So when Bharti and Jio has a better pricing power and better balance sheet. So I think Bharti is a better play in telecom. अगर Idea it's a penny stock, it's a hit or a miss. So I think my recommendation would be to go with Bharti over Idea in telecom space.
Sir, Bharat Forge for short term. Buying price is 1365. Okay, 1365. Hmm. सो आई थिंक जब तक ये स्विंग लो है 1290, ये सपोर्ट है, अगर 1290 ब्रेक करेगा तो और करेक्ट हो सकता है स्टॉक, और बट ट्रेंड इज लोअर, नीचे ही है, लोअर हाइज लोअर स्विंग लोज भी, लोअर हाइज लोअर लोज ही बना रहा है, तो कोई भी एक प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस नहीं किया है एवर सिंस द करेक्शंस व्हिच हैज स्टार्टेड इन जून. तो almost 6 महीने से it is making lower high lower low structure on the daily scale. तो जब तक ऊपर में 1400 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक I don't think there will be much revival in the stock. But yes, नीचे में सपोर्ट है 1280 के आसपास, तो वो सपोर्ट से होल्ड कीजिए and look for 1400 on the higher side. Sir, SBI card 70 stock at 955. SBI कार्ड ऑल्सो इज नॉट दैट ग्रेट, बट नीचे से अच्छी रिकवरी देखी गई है, तो आई थिंक 680 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. ऊपर में अगर 740 निकल जाता है तो एक और स्ट्रॉन्गर मूव बन सकता है, बट ऑल्दो स्टॉक इज अ बिट लो बीटा, तो कितना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, बट नीचे में भी सपोर्ट है 680 और 690 के आसपास, तो 690 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए, लुक फॉर 750 ऑन द हाई साइड. Sir, why HAL stock is falling in spite of good order book? I think ऑर्डर बुक तो लास्ट 5-6 साल से ही था, बट इट्स जस्ट दैट एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है. अगर हम वीकली स्केल की बात करें तो द स्टॉक फ्रॉम लास्ट say from in 2023 it was around 11-1200, वहां से almost 5 5 times in 2 years. So after a short strong run up, I think it generally consolidates. We consolidate, time consolidation भी होता है, price consolidation भी होता है. So after this, once the consolidation is behind it, and once the stock crosses and closes above 5,000 on the high side, so fresh leg of up move will start in HL. So I think for long term, you should definitely hold on to your position and look for a higher target towards 6,000, 6,500 for 2-3 years time per se. But एक प्राइस पैटर्न होता है एंड प्राइस कंसोलिडेशन होता है और टाइम कंसोलिडेशन होता है. तो द स्टॉक इज इनटू बोथ. प्राइस कंसोलिडेशन हो गया, अभी टाइम कंसोलिडेशन होगा. तो वंस दिस इज ओवर, द सेकंड लेग of the move will start above 5,000. Sir, I guess it's almost time. We have 3 trades. Keep an eye out. Focus on these trades. All the details have in the session. Sure. Iron Bull strategy: sell 52,800 call and 52,800 put. Perfect. Buy 53,300 call and 52,300 put. Combined premium 420 points. Stop loss 80 points. 420 points is BTST. the inflow. Yes. Sorry. 420 points is the inflow. So the max risk of the strategy is 80 points only. Yes, sir. मार्केट में लोअर सर्किट भी लग जाएगा तो भी आपका मैक्स लॉस इज 80 points. 80 points. Yes. BTST buy near 170, Divyani stop loss 165, target 178, and CDI call United Spirits buying at 1565, stop loss 1520, target 1650. Yes, perfect. So this is the trade. Thanks a lot everyone for joining in. Thanks a lot Nikon sir for Thanks. sharing valuable knowledge and 3 different kinds of trade. I guess it's been a while since we had any option strategies. True. And guys, I know I can see some questions coming in which we have not taken, but we have the time issue. So please drop it on Stockomo and we'll be happy to revert there.